my name is Sadia Beg. I am a behavioral psychology practitioner. Since 2016, I've been running a small consultancy in Islamabad by the name of Asa Consult. And in this consultancy, I provide services both to organizations and individuals. So within the organizational area, I've mostly worked with leadership development and coaching for leaders and managers. But other than that, I've also developed and implemented coaching programs for interns. I have also been running a social emotional learning program for students. For individuals, I offer counseling and therapy, and people come to me mostly with problems like stress, anxiety, mild depression, relationship issues, and goal achievement. So if they have a goal, but they don't really know how to work towards that goal, that is something that I can help them with. So this, I think, was the important information about me. So आज सबसे पहले जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि स्ट्रेस है क्या. So I will just take some time to explain what stress actually is. So a very interesting fact about stress is that it is not inherently bad. जब हम stress का लफ्ज सुनते हैं when it comes to our consciousness, our mind, तो सबसे पहले हम we feel kind of a tension in our head and in our neck and shoulder area, and we relate stress with something which is filled with tension, and the word has a very negative connotation. But actually जब हम stress की बात करते हैं तो जो चीज हम experience कर रहे होते हैं, it is actually called distress. So there are basically, हम कह सकते हैं कि there are two kinds of stress. So one is called distress and the other one is called eustress. So stress is extremely important for us. It has been very helpful for humans for our survival. जब हमारे ancestors, they were living out in wild. Stress is something that helped them act or react in order to survive, take the right decision so that they could either fight or flight in situations that were necessary for their survival. So that is why stress is not inherently a bad thing. Eustress is something that is extremely important for us, that helps us act. So eustress gives us the possibility to realize that this is the time where we need to act. तो अगर eustress हम अपने अंदर से निकाल देंगे, तो we will come into inertia. हमारी ability to act will be compromised a lot, और हम कुछ कर नहीं सकेंगे life में. So eustress give us this balanced amount of stress that is necessary for us to realize that now is the time that we need to act, we need to do something. On the other hand, distress is the negative kind of stress जिसको हम अपने everyday life के अंदर stress के नाम से जानते हैं. So distress is negative in the sense that it actually gives us a feeling that things are really bad, we can't do anything, and that actually affects our ability to act. तो हमारी ability to act रुक जाती है because of distress. और हम अपने ही इमोशंस के अंदर, अपने इमोशनल रिएक्शंस के अंदर इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि हमारी जो एक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है. सो दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेस जिसके बारे में हम मोस्टली बात करेंगे आज, और जो जरूरी है कि हम उसको मैनेज करना सीखें ताकि हम अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, अपनी लाइफ को ज्यादा इफेक्टिव बना सकें. और आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर सेल्व्स एज इंडिविजुअल्स एंड एज मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. सो हर रोल के अंदर, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल रोल हो या हमारे पर्सनल रोल हो, the ability to manage stress is extremely important, क्योंकि when we have the ability to manage stress, we can bring more productivity in our life and we can make our actions more effective. एक तो ये रीजन है.
स्ट्रेस को मैनेज करने का एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है कि इट हैज वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ बेसिकली. सो स्ट्रेस जो है a lot of our cardiovascular diseases, for example, they start from stress. हमारे जो स्टमक या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं दे आर रिलेटेड विद स्ट्रेस, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रहे होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, एंड दे अफेक्ट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ वेरी नेगेटिव वे. वहां से बहुत सी हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं वो भी वहीं से इनिशिएट होती हैं. अदर देन दैट, एक्चुअली रिसर्च हैज शोन कि स्ट्रेस जो है इट एक्चुअली एक्टिवली किल्स सेल्स इन मेमोरी सेंटर ऑफ ब्रेन. तो जब हम कोई भी इंसान कंटिन्यूसली स्ट्रेस के अंदर रहता है, प्रेशर के अंदर लाइफ गुजारता है, तो आप नोटिस करेंगे कि एट सम पॉइंट उनकी मेमोरी जो है वो बहुत खराब हो जाती है. चीजें खास तौर से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है दैट इज अफेक्टेड वेरी नेगेटिवली, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइलेंट किलर बिकॉज हमें पता ही नहीं चलता मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हम स्ट्रेस में हैं या स्ट्रेस किस तरह से हमारी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है. और जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आएगी कि इट इज इम्पोर्टेंट टू मैनेज स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को मैनेज करने का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते. सो दैट इज जस्ट गिवन that we have to be able to realize that we are affected by stress, we are negatively affected by stress, and we need to do something about it. So अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या. Emotional intelligence is basically our ability to connect to and manage and use the emotional information both from ourselves and from people around us. So emotional intelligence is not about being emotional all the time. It is about being aware that we have emotions, that they affect our actions and our decisions in specific situations all the time, and that we can use this information productively to improve the quality of our lives and the quality of lives of people around us, basically. So it is about connecting to our own emotions and connecting to emotions of people around us, and then try to manage the emotions rather than being managed by the emotions. So जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो हमें ये अवेयरनेस होती है कि एग्जैक्टली हाउ किसी भी अच्छी या बुरी सिचुएशन में हाउ आवर इमोशंस अफेक्ट अस. हम अपने इमोशंस के टूवर्ड्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम दूसरों के इमोशंस के टूवर्ड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, और हमें ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे करना है इस पूरे प्रोसेस को, so that we are able to control our emotions rather than letting our emotions control us. So in most simple words, that is the definition of emotional intelligence, and it is about being able to manage our emotional experiences. यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगी एक बहुत ही सिंपल और आई थिंक वाइडली नोन model of emotional intelligence. So this is a competency based model of emotional intelligence, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. I don't want it to get boring, but I think it's extremely important कि हम इस मॉडल को थोड़ा सा देख के थोड़ा सा समझ लें, ताकि हमने इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल करना है वो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा. So as you can see, this model is divided into 5 overall skills, हम इनको कहते हैं, और ये 5 overall skills जो हैं they are then further divided into competencies. So as you can see, the first skill that we work with here is called self-perception. So in the realm of self-perception, we work with self, how we
perceive ourselves. It is related to our confidence, our sense of self, our sense of identity. And self perception के अंदर जो emotional self awareness है, that is the most important part. That is where we start always. So self perception is like the base of the whole emotional intelligence. It is um, the ground on which we build the building of emotional intelligence. So when we have a positive self-perception, when we are aware of our emotions in different situations, we have the ability to maintain a balanced confidence, and we know how we should react in situations so that we do not end up in stress, basically. So we look inwards, we look at ourselves, we start working with ourselves, and we try to create as much awareness around the self as possible, because that gives us the opportunity to realize how some of our own behaviors, our own reactions, our own beliefs and thoughts are actually harming us and leading us towards stress. So this is where we start always, and we use most of the time on a practice of self-awareness, self-regard, and self-actualization, because these competencies help us further in the process in building rest of the emotional intelligence. So as I said, self-perception helps us maintain a balanced confidence in ourselves so that we do not get overconfident, because जब हम ओवर कॉन्फिडेंस होके कुछ चॉइसेस कर लेते हैं लाइफ में, तो दे ऑफ्टन एंड इन स्ट्रेस, और दे ऑफ्टन लीड अस टुवर्ड्स स्ट्रेस. और अगर हम ऑन द अदर हैंड बिल्कुल कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, तब भी इवेंचुअली हम अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं खुद. सो दिस एक्चुअली गिव्स अस अ रियलाइजेशन कि किस तरह हमारे खुद के behaviors, thoughts और beliefs जो हैं वो हमारे लिए stress create कर रहे होते हैं. And once we have that realization, we can work towards improvement. उसके बाद जो next हमारा skill है वो होता है self expression. Self expression के अंदर we make sure that we express ourselves, we express our thoughts, beliefs, ideas, in situations where it's needed, and we do it again in a balanced way. So we can maintain respect for our own selves and for opinions and ideas of other person as well. So a self-expression is not just about me saying what I feel all the time. It is equally about listening, being aware of how what I say affect other people, and respecting the point of view of the other person. So, for example, being assertive means that I'm able to express myself, but I am also able to listen to the other person. So, जब हम इस balance को maintain करने की कोशिश करते हैं, तो we make sure कि हमारी जो dialogues हैं, जो हमारी conversations हैं, जो हमारे arguments हैं, वो एक रेड जोन में ना जाएं और एक अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाएं. व्हेन वी ट्राई टू मेंटेन रिस्पेक्ट फॉर आवर ओन ओपिनियन एंड ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन, we make sure that in worst case scenario what we can do is to agree to disagree. So we don't have to agree to everything, but we should, or we have the ability to listen openly to the point of view of the other person and their ideas and beliefs. Then we come to interpersonal realm or interpersonal skill. Interpersonal skill basically makes it possible for us to look outwards. So in self-perception and self-expression, mostly the focus is me, the self, inwards. And in interpersonal, we turn the focus towards people around us, outwards. You can see one of the most important interpersonal skills or competencies, empathy is present here.
And empathy is basically almost directly related to emotional self-awareness, this first thing, because when we are able to connect to ourselves, it becomes easier for us to connect to others, which basically is empathy, what basically empathy is. So when we have a practice or a solid practice of interpersonal relationships, empathy, and social responsibility, we are aware how different um, things affect others. We are always focused on how things affect us, how factors in our environment affect us, how other people's behavior affect us. But with the practice of interpersonal relationships, we become aware how we also affect others. This is one thing. Another important thing with regard to interpersonal relationships is that through this practice, actually, we become aware which relationships are important to us, in which relationships we should put our effort, our energy in, and invest our emotions in, and which relationships are actually not giving us anything back, and maybe we should move away from those relationships. So a lot of time, खास तौर से जब हम relationships के अंदर difficult relationships के अंदर emotions को manage करने की बात करते हैं, तो बहुत दफा हमने क्योंकि इनिशियली एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया होता है, इमोशनली इन्वेस्ट किया होता है, तो it becomes, it feels like a defeat to us to come to the realization that this relationship is actually not providing us any positivity in our life. And this practice makes it clear who are significant others, where should we invest our energy and our emotions, and which relationships we should maybe move a little bit away from because they are creating negativity for us, because we are getting emotionally drained because of those relations, and it's actually not working out basically. So empathy is something which again is related to respecting our own self and maintaining the balance between respecting our own selves and others. So empathy is our ability to connect to other people on an emotional level. And as I said, we can only do that if we are able to connect to our own emotional selves first. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एरिया है, जो नेक्स्ट स्किल है, it is decision making. And when we have worked with self-perception, self-expression, and interpersonal relationships, we learn how to be in touch with ourselves, how to be in touch with others, and how to be in touch with reality, the environment that we are in, the situation that we're involved in. As you can see, there are three competencies here: problem solving, reality testing, and impulse control. So when we are in touch with reality, we respond in difficult situations, especially we respond towards the need of the reality, the need of the situation. When we are emotionally intelligent. If not, then we mostly react towards our own emotions. और impulse control भी इसी के साथ related है. Impulsive decisions, impulsive reactions probably are the most valid sources of stress in our life. बहुत दफा मुश्किल situations में, especially when we react towards our own emotions, we act in ways, we react in ways that we regret afterwards. Regret, guilt, and shame are three very toxic emotions that create a lot of unnecessary stress and tension for ourselves. So
when we have a solid practice of emotional intelligence, when we are in touch with reality, when we react towards the need of the situation rather than reacting towards our own emotions, we actually respond in a more productive way. We respond in ways, we make choices that bring the whole situation towards improvement, rather than uh, towards something that we will regret afterwards. So a practice of decision making, problem solving, impulse control, and reality testing actually makes it possible for us to minimize stress from our lives, because the choices and decisions we make, they are not leading towards guilt and regrets. So जब हम गिल्ट और रिग्रेट को अपनी लाइफ में मिनिमाइज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है. सो इन अ वे आप देख सकते हैं कि ये सब प्रैक्टिसेस जो हैं they are preventative, so they prevent us from ending up in stress. जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो हम मेक श्योर कर रहे होते हैं ऑलरेडी दैट वी डू नॉट एंड अप इन स्ट्रेस. और इसमें जो लास्ट स्किल है जो आप देख सकते हैं, इट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो इट इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस बेसिकली, कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू ऑल द डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज मेक श्योर करना है कि आप स्ट्रेस में एंड अप ही ना हो. चीजें जो हैं वो यू स्ट्रेस से डिस्ट्रेस की तरफ ना जाएं. उसके अंदर एक और हेल्पफुल फैक्टर जो होता है वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्टिमिज्म. आप इमेजिन करें कि एक आयरन का ब्लॉक है और एक इलास्टिक है. द ब्लॉक ऑफ आयरन इज मोर रिजिड, उसको मोल्ड करना ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है रादर देन एन इलास्टिक which is easy to mold. So जब हम यहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं. तो when we have a balanced amount of flexibility and adaptability, we make sure that we can adjust adjust according to the changes in environment. तो अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज है या हमें किसी नई चीज के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है तो हम उसको अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकें. एंड इट डेफिनेटली लीड्स टूवर्ड्स लेस स्ट्रेस. हम जितने ज्यादा अपने मेंटल रिजिड होंगे रादर देन मेंटली फ्लेक्सिबल, हम उतना ही ज्यादा स्ट्रेस अपने लिए खुद क्रिएट करेंगे. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग स्ट्रेस. लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में भी एज आई सेड बैलेंस का होना बहुत जरूरी है. उसमें ऐसा नहीं है कि हम सूखे पत्ते की तरह, टूटे हुए पत्ते की तरह हवा के साथ हर तरफ उड़ते फिरें. वी हैव टू बी ग्राउंडेड. और ये ग्राउंडेडनेस जो है इट कम्स फ्रॉम सेल्फ perception and self-expression. जब हमारा strong होता है तो we are grounded, but at the same time we also have the flexibility कि अगर हमें अपना course of action change करना पड़े according to the need of the situation, तो हम वो कर सकते हैं without getting stuck into any negativity. And then optimism is also extremely important. अगर हम optimism का मतलब ये है कि we have a better hope for future. We are hopeful that the future is going to bring something positive to us, and we definitely work towards that. So optimism is a very positive trait or positive competency. Or optimism जो है that it also makes sure कि हम stress ना लें for future, for example, क्योंकि स्ट्रेस अक्सर आता है because of regretting about past events or ruminating about future events. So optimism makes sure that we have a positive picture of the future in our minds. We do not unnecessarily worry about the future. We do not feel that the future is doomed, as we can
sometimes have feeling of, uh, but rather we stick to the positive or the optimistic, the hopeful view of future, that future will bring something positive to us, because that is something we can work towards. Past is something that is gone. We can never go back to the past and change anything. We cannot go to the future and see what is going to happen. What we can do is to utilize our present, our now, in order to make sure that we have a better future. So, all in all, a practice of emotional intelligence, a strong and social emotional intelligent, first of all, makes sure that we do not create unnecessary stress for ourselves. And if for some reason we end up being in a stressful situation, because stress is a normal part of everyday life, it's not important कि हमने stress को बिल्कुल remove कर देना है अपनी जिंदगी से, because we can't do that. But what we can do is to make sure that we are resilient. So emotional intelligence practice के साथ resilience हम build up करते हैं, और resilience जो है, it makes sure कि if we fall down, we are able to stand up, brush the dust off, and then keep going. That is the most important thing. So stress का होना बुरी बात नहीं है, बट स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है. डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट a practice of emotional intelligence, it is a practice, which means it is a process of building up some competencies slowly, with effort and consciousness. So ये ऐसी चीज नहीं है जो ओवरनाइट हो जाती है. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट जो मैं शॉर्टली जो कह सकती हूँ वो ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज सेल्फ परसेप्शन और हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसका जो उसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है. अब ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं, एज आई सेड, इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस. लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि लेट्स से कि आप ऑफिस में हैं या मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, एंड आई हैड some heated argument at my workplace, and I feel stressed or frustrated because of that. And then I come home and I see my kids, they are making noise, they are playing whatever, कोई गंद उन्होंने डाला हुआ है. तो अगर I am emotionally intelligent तो मुझे पता होगा I am feeling frustrated, I am stressed. अब इस सिचुएशन में मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. या तो मैं अपना सारा वो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस जो है उसको लैश आउट कर दूंगी ऑन माय किड्स, या आई विल बी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड आई विल बी अवेयर दैट इट्स नॉट देयर फॉल्ट दैट आई हैड अ बैड डे एट वर्क. आई विल टेक अ डीप ब्रेथ. Breathing is extremely important. I will ask them, can you please tone down a little bit? I am frustrated because of blah blah blah, and I need a little bit of peace. So in that way, मेरा एक रिएक्शन जो है वो ज्यादा टेंशन की तरफ मुझे लेकर जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस की तरफ लेकर जाएगा, और दूसरा रिएक्शन which is calculated, which is in contact with my own internal situation, it will lead towards more peace for me and for my surroundings. तो हमारे अपने जो फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स का, वो समझना बहुत जरूरी है. जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम वो कैलकुलेटेड होता है, और जो रिएक्शन है वो इम्पल्सिव होता है. एंड इम्पल्सिव रिएक्शंस विल ऑलवेज लीड टूवर्ड्स बिहेवियर्स जिनको हम बाद में रिग्रेट करते हैं. if I choose to leash out on my kids, I will regret it afterwards कि उनका कोई कसूर नहीं था, it wasn't their fault, तो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था. And then again I will create more stress for myself. तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है ना, फोकस इनवर्ड्स लेके आना जरूरी है. वो कौन से पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं जो हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, वो कौन से हमारे अपने रिएक्शंस, हमारी अपनी थॉट्स हैं जो हमारे लिए स्ट्रेस को क्रिएट कर रहे हैं. That should always be the starting point.
एक्चुअली बात ये है कि हमें लगता है, वी हैव अ परसेप्शन कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, विच इज ट्रू टू अ लार्ज एक्सटेंट। हम डायरेक्टली दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने इंटरेक्शंस को थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि इट इज अ पैटर्न ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आप एक्ट करते हैं, दूसरा रिएक्ट करता है, फिर आप रिएक्ट करते हैं, फिर दूसरा एक्ट करता है, एंड इट इज अ स्पाइरल मूवमेंट, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बिल्कुल किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ईच इंडिविजुअल हैज देयर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि हम उनको कहें कि ऐसे नहीं, ऐसे करें, या आपने ऐसे किया, या क्यों किया, वगैरह वगैरह। वी डोंट लाइक इट, हमें भी अच्छा नहीं लगता, और अगर हम दूसरों को कहें तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज हम कर सकते हैं वो है रेगुलेटिंग बिहेवियर्स ऑफ अदर्स थ्रू आवर ओन बिहेवियर। सो अगर आप अपने रिएक्शंस को दूसरों के रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने रिस्पॉन्सेस को अगर आप कैलकुलेटेड कर लें, विच इज अ हार्ड प्रैक्टिस, नॉट इजी आई वुड से, तो आप दूसरे के रिएक्शन को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर एक सिचुएशन है जहां पे अ पर्सन से समथिंग टू यू, ठीक है, लेट्स से काम पे आपके बॉस ने आपको कुछ कहा, उनका जो एक्शन था वो आपके कंट्रोल से बाहर था, लेकिन आपने उस एक्शन के टूवर्ड्स कैसे रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज टोटली अंडर योर कंट्रोल। वहां पे अगेन या तो आप इम्पल्सिवली रिएक्ट करके अपने आप को सबमिसिव कर सकते हैं या एंग्री कर सकते हैं, या फिर आप असर्टिव रहकर, विच इज द बैलेंस बिटवीन एग्रेसिवनेस एंड सबमिसिवनेस, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन अ वे जहां पर आप ना तो एंगर को शो कर रहे हैं, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दें। क्योंकि अलॉट ऑफ टाइम्स होता यह है कि जब हम, जहां पे खासतौर से जिन रिलेशनशिप्स में पावर इम्बैलेंस होता है ना, वहां पे हम ऑटोमेटिकली सबमिसिव हो जाते हैं। हमें ये लग रहा होता है कि अगर हम चुप कर जाएंगे तो मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि असर्टिवनेस हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई बाउंड्रीज। हम दूसरों को अगर बताएंगे नहीं कि आपकी बाउंड्री यहाँ खत्म हो रही, नाउ यू आर एंटरिंग माई पर्सनल स्पेस, और यू आर वायलेटिंग माई बाउंड्रीज, तो उनको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन उसको करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमने अग्रेसिव होना है या हमने एंगर के थ्रू ही उसको करना है। हम बहुत आराम से एक असर्टिव तरीके में रहकर भी उस चीज को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज सच अ पावरफुल टूल, जिसको अगर हम वाइजली इस्तेमाल करें तो हम डेफिनेटली एक्शंस, रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, बट श्योरली वी कैन डू दैट। देयर आर स्पेसिफिक टेस्ट जो हम करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये रहता है कि मेजरमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आई नो समटाइम्स हमें ये एक एक गेजिंग पॉइंट चाहिए होता है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैंने यहाँ जाना है, लेकिन जब हम EQ की बात करते हैं ना, तो it is a lifelong process. It is a process of continuous improvement of yourself, always striving towards finding the best version of yourself. It's a dynamic process. So इसका कोई end goal नहीं है कि मैंने अगर ये कर लिया तो मैं बहुत emotionally intelligent हो जाऊंगी। It is a continuous process. Definitely there are tests जो आपको बताते हैं कि आप where do you lie, या कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जिन पे आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल उसको हमने इम्प्रूव करना होता है। वी हैव टू टेक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी, और वन बाय वन हम उस अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। तो जो मेरा तरीका है, जो जब मैं लोगों के साथ काउंसलिंग कर रही होती हूँ, तो मैं हमेशा उनको एक कॉम्पिटेंसी का इंट्रोडक्शन देती हूँ, हम एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं जिससे वो कॉन्सेप्ट्स उनके लिए ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, एंड देन आई टेल देम, आई गिव देम 10 to 12 days जहां पे उन्होंने उस स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी को प्रैक्टिस करना होता है इन देयर एवरीडे लाइफ एंड देयर एवरीडे लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ सिचुएशंस। और फिर उसके बाद हम चीजों को रिविजिट करते हैं, उनको हम देखते हैं कि वेयर डू वी ग्रो फ्रॉम हियर, नॉट गो बट ग्रो फ्रॉम हियर। सो
It is a process of continuous improvement, but definitely tests available हैं. पाकिस्तान के लोकल कोई टेस्ट है या नहीं, ऑनेस्टली मुझे उसका पता नहीं है. आई हैव बीन वर्किंग विद एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो टेस्ट हैं वो डेफिनेटली यूज होते हैं. दे आर a little bit expensive, but they do give a very good picture of your current emotional intelligence state. बहुत valid और अच्छे वो टेस्ट हैं. I've used them a lot. So yes, it can be done. मैं फिर से वही बात करूंगी कि हमने ओवर द years अपने पैटर्न्स ऑफ हैबिट बनाए होते हैं. These patterns are hardwired in our brain. हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से. हमारी एक्सपेक्टेशन टू मच होगी अगर हम ये कहें कि ये एक सिंपल प्रैक्टिस करने से आई विल बी एबल टू मैनेज स्ट्रेस. जो चीज ऑफ टॉप ऑफ माई हेड जो मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ और कह सकती हूँ वो ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले होल्ड बैक योर रिएक्शन. इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करें. टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स थ्रू योर नोज. ट्राई टू क्रिएट एन ओवरव्यू ओवर सिचुएशन के हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, सो दैट मेरा रिएक्शन जो है वो इस सिचुएशन की वर्सन ना करे बल्कि इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए. ठीक है, सो दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विद. डेफिनेटली ब्रीदिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ट्राई टू क्रिएट एन ओवरव्यू ओवर सिचुएशन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना तो हम ये नहीं देखते कि व्हाट इज द नीड ऑफ सिचुएशन. हम ये देखते हैं कि हाउ एम आई फीलिंग इन द सिचुएशन एंड देन वी रिएक्ट टुवर्ड्स आवर ओन इमोशन. आई एम फीलिंग एंगर, सो आई रिएक्ट टुवर्ड्स एंगर. I am feeling disgust, so I react towards disgust. I do not see why I'm feeling it. What actually happened? How should I be reacting right now? एक और जो छोटा सा इशू आता है नॉर्मली लोगों के साथ वो ये है कि हम हमारे जो बेसिक 6 इमोशंस है ना हमें उनका ही पता है, तो ना हम अपने इमोशंस को ठीक तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं. अब एंगर के कई ये 6 प्राइमरी जो इमोशंस हैं उनके साथ बहुत से सेकेंडरी इमोशंस रिलेटेड होते हैं, फिर कुछ टर्शियरी इमोशंस रिलेटेड होते हैं. तो उन सब इमोशंस फीलिंग्स की क्योंकि रियलाइजेशन नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हम क्या फील करें एग्जैक्टली और हमने कैसे रिएक्ट करना. तो इट इज अ प्रैक्टिस जो ओवर द टाइम आप बिल्डअप करेंगे. ये कोई जादू की छड़ी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन टू स्टार्ट विद डेफिनेटली वे योर ओन रिएक्शंस. आपको सबसे पहले फोकस इनवर्ड्स लाने की जरूरत है. पर्सनली बिकॉज मेरा फील्ड ऐसा है कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन लिविंग इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स and they don't have the opportunity to leave the relationship. Not everyone has the opportunity, right? तो उसमें हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करना की प्रैक्टिस बिल्डअप की है विद दीज पीपल दैट आई हैव बीन वर्किंग विद. इट टेक्स अ लॉट ऑफ courage, it takes a lot of effort, but it is definitely doable. I have seen results कि जब हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना तो वो एक आप समझ लें कि टेफ्लॉन जैकेट की तरह हो जाता है कि कोई भी चीज उसके ऊपर स्टिक नहीं करती. आपके पास एक इनविजिबल क्लोक होता है जिसके ऊपर से चीजें लग के चली जाती हैं, बट दे डोंट पेनिट्रेट इनटू योर सोल एंड दे डोंट आपकी सोल को हर्ट नहीं करते वो. तो this is all about practice. This is all about giving yourself time and space, and finding out कि क्या हो रहा है और कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है. और ये सब सिचुएशंस बहुत यूनिक होती हैं, तो जनरलाइज करना थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो इट्स नॉट बेनिफिशियल. अगर हम अपने माइंड में थोड़ा सा ये जैसे आपने न्यू ईयर की बात की कि अगले साल में हम अपना ये टारगेट रखें कि हमने अपने सेल्फ केयर का पर्सपेक्टिव जो है वो हर चीज में लेकर आना. सेल्फ केयर का मतलब बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं है. सेल्फ केयर का मतलब ये है
कि मैंने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे किसी ने कहा है या बिकॉज इट्स अ हाइप वर्ड या कुछ भी ऐसी बात नहीं, इसलिए क्योंकि आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. I am responsible for my own happiness, my own life. I need to take charge of my life rather than giving it to my emotional reactions. And for that, in order to take care of myself, I need to take this break before reacting so that I can respond in a way ताकि मैं अपने मेंटल हेल्थ की केयर कर सकूं, मैं इस तरह के रिस्पॉन्सिव रिएक्टिव पैटर्न्स में ना जाऊं विच आर इवेंचुअली क्रिएटिंग guilt, regret, and shame for me, and eventually creating a lot of negativity for me. So I don't want to go there. I want to take care of myself. I want to take care of people around me who are important for me, and that's why I'm doing it. So having a perspective of self care is extremely important.